क्लास 6 ज्योग्राफी। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ कराने जा, जो कि चैप्टर 6 है इसका। चलिए देखिए, इसकी पहले मेन हेडिंग देख लेते हैं, फिर चैप्टर में चलते हैं। फर्स्ट है इसमें, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन 120 करोड़ एज पर सेंसस ऑफ 2011, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार। सेकेंड है ये, मुंबई इज अ नेचुरल harbour. Third है, the capital of India is New Delhi. Third, Telangana state is formed after separation from Andhra Pradesh. Number 5, the Vindhya and Satpuras are the oldest mountain range of the world. Tsunami is a high tides caused in sea. सब कुछ ले जाती है। Internal process, the process that originates inside the earth is called the internal process, that is volcano, earthquake. External process, the process which works on the earth's surface is called external process, that is formation of mountain, soil, etc. Eroding, the process of gradual destruction and removal of the soil in a particular area by rivers and sea or the weather. Deposition, the various factors responsible for the transporting the erode material is deposition. Transportation, the various factors, wind, water, etc. carries the erodes matter from one place to another is transportation. Mountain, it is that part of landform which is approximately 1000 meters above the sea level. It has a steep slope and a pointed top. Fold mountain, when the tectonic plates compress towards a given point due to compressional force inside the surface of the earth, fold mountains are formed. That is, Himalayas are the young fold mountain. Fault or block mountain. So, due to gravitational force, large area of rock are broken vertically. Vosges mountain of Europe is an example of a block mountain. Now you can see this picture. ये सारे लैंड एरिया हैं और हमारे ये हैबिटेट में दिखाई लैंड फॉर्म से। देखो, ये माउंटेन हो गया, यहाँ पे ये माउंटेन रेंज हो गई, ये बेसिन है, ये हिल है, यहाँ पर प्लेन है, ये ट्रिब्यूटरी है, प्लेट्यू है, यहाँ पे लेक है, यहाँ पर रिवर्स, और यहाँ पर माउथ ऑफ रिवर, डेल्टा और डिस्ट्रीब्यूटरी पेनिनसुला, इंथोसिया, और ये साल्ट लेक वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पूरा का पूरा सी है जो ब्लू कलर से दिखाई दे रही है। ये सारा का सारा हमारा लैंड फॉर्म है यहाँ पे। नाउ ये फॉर्मेशन अब दिखाया गया। माउंटेन एवरेस्ट का जो फॉर्म है वो फोल्ड माउंटेन है। ये क्रस्ट इस तरह से चलता है, ऊपर चल जाता है, और ये माउंटेन इसी तरह से बना हुआ है जो कि हिमालय है आपका। यहाँ पर क्या है, होस्ट ऑफ ब्लॉक माउंटेन दिखाई दे रहा है। ये कार्बन है, ये कार्बन है। यहाँ से ये टूट कर नीचे दब जाता है और ये ऊपर प्रेशर से, देखो ये प्रेशर दिखा रखा है, ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है प्रेशर से। ये ऊपर चला जा रहा है, ये नीचे आ जा रहा है, तो ये अपना माउंटेन फॉर्म कर देता है। ये है वोल्केनो। अब वोल्केनो माउंटेन, ये वोल्केनो से माउंटेन बना हुआ है पूरा का पूरा। अब वोल्केनो हुआ कैसे, इस तरह से दिखाया गया इसमें। अ ह्यूज ऑफ स्टीम वोल्केनिक एश एंड गैसेस। यहाँ क्या है, लावा बॉम्ब से यहाँ पे द वोल्केनो कम इज कंप्रेस्ड ऑफ लेयर्स ऑफ एश एंड लावा। ये यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ प्रेशर पड़ता है यहाँ से, और ये ऊपर की ओर तोड़ करके निकलता है। कुछ साइड से भी निकल जाते हैं, कुछ इस साइड से भी निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या है, लावा बॉम्ब्स हैं ये,
और माउंटेन रॉक्स फ्लोइंग डाउन द साइड इज कॉल्ड लावा। ये साइड से जो निकलना चालू हो रहा है लिक्विड की फॉर्म में, ये लावा बोलते हैं इसको। जिस गेम के बारे में आपको बताना है, अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो इस गेम का नाम बताएंगे आप कौन सा है। ये है प्लेट्यू, आपको दिखाया गया इस फिगर में। ये आपका एक और दिखाया गया हैबिटेट दिखाया हुआ यहाँ पर, कैसे लोग रहते हैं। ये आपका क्या है, ये रॉक ब्रिज है, अरुणाचल प्रदेश में बना हुआ है। ये रस्सियों से बना हुआ है बच्चों, जिसपे लोग आर पार जाते हैं। ये आपका पॉल्यूटेड रिवर है, जिसमें कितनी गंदगी कर रखी है इसको, और देखो क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर डाल रखे हैं। ये आपका डिजर्ट एरिया है, जिसमें कैमल्स चल रहे हैं, और ये पानी भरने के लिए कतार लगी हुई है। यहाँ पानी भरने के लिए ये लेडीज जा रही हैं सब, देखो अपना मटके उटके को लेकर के, अर्थन पॉट को। यहाँ देखो ये इट इज द रेस है, ये नाव से रेस लगती है, केरल में है ये सारा। ये ओशियन है, ओशियन के किनारे लोग अपना पिकनिक मना रहे हैं। ये भी हैबिटेट है आपका दिया हुआ है, जो कि हट्स बना करके रहते हैं ये लोग। ये भी आपका बिल्डिंग बना रखे हैं, ये भी हैबिटेट्स हैं, ऐसे लोग रहते हैं घर बना करके माउंटेन एरिया में। ये आपका टी है, यहाँ पर चाय पत्ती बागानों में तोड़ी जा रही है टी लीव्स। ये भी आप माउंटेन में ही घर बने हुए हैं, सीढ़ी के ऊपर जा जाकर बना लेते हैं। ये आपका राफ्टिंग दिखाई दे रहा है, इसमें सभी लोग मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर देखो कोट्स को और शिप्स को जो है चराने के लिए ले जा रहे हैं, ग्लेशियर के लिए। ये अपना बर्फीला इलाका आ गया है, इसमें बर्फ ही बर्फ पड़ रही, फिर भी आदमी लोग जा रहे हैं, अपना हैबिटेट है ये भी आपका। चलिए थोड़ा क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर लैंड फॉर्म। सो आंसर है द मेजर लैंड फॉर्म्स आर, फर्स्ट है माउंटेन, द हिमालयस, द रॉकी। सेकंड है प्लेट्यू, द डिकन प्लेट्यू और गुयाना प्लेट्यू। प्लेन है द नॉर्थन प्लेन, द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। डिफरेंस बिटवीन द माउंटेन एंड प्लेट्यू। आंसर है डिफरेंस बिटवीन द माउंटेन एंड प्लेट्यू एज फॉलोज। सो पहले माउंटेन ले रहे हैं, फिर इसके बाद प्लेट्यू। तो नंबर 1 पे देखते हैं क्या है दोनों में। दे आर हाई एंड स्टेप लैंडफॉर्म दैट एक्सटेंड above the surrounding areas। और प्लेट्यू में द प्लेट्यू आर द फ्लैट surface area bounded by steep slopes। सेकंड में देखिए, द हाईएस्ट ऑफ द माउंटेन इज अप्रोक्स 1000 मीटर above the sea level। और यहाँ क्या है, द हाइट ऑफ द प्लेट्यू इज अप्रोक्स 300 to 1000 मीटर above the sea level। थर्ड पॉइंट माउंटेन का लेते हैं, द पीक ऑफ माउंटेन्स आर कवर्ड बाय स्नो। प्लेट्यू में क्या है, दे आर स्टोर हाउसेस ऑफ मिनरल्स विच लीड्स टू प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज। माउंटेन में देखते हैं फोर्थ नंबर में, माउंटेन्स आर रिच इन फॉरेस्ट बट लैक हैबिटेशन। फोर्थ नंबर प्लेट्यू में, दे आर रिच इन वेजिटेशन एंड हैबिटेशन, दोनों में ही रिच है ये। राइट द डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन। सो आंसर है देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। दे आर एज फॉलोज। फर्स्ट नंबर, फोल्ड माउंटेन, दे फॉर्म व्हेन द अर्थ's crust bend the buckles। इसका एग्जांपल फॉर एग्जांपल है हिमालयास एंड एंडीज। सेकंड है ब्लॉक माउंटेन, दे फॉर्म्स व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड displaced vertically, so that is Vosges mountain of Europe। थर्ड है volcano mountains, they forms due to volcano eruption mountain Kilimanjaro in Africa। ये Kilimanjaro जो है माउंटेन अफ्रीका का है।
How are mountains useful to man? Answer: mountains are useful to man because first, they are the large reservoir of water. Second, they are the major source of river, and river water is widely used for irrigation purpose and in the production of hydroelectricity. Third, they are rich in variety of flora and fauna. How plains are formed? So answer is here. Plains are the flat and relatively low-lying areas of the Earth's surface. These plains are formed by reservoir, their tributaries, and the distributaries. The rivers flows down from mountain and erode them. They carry the eroded material, stone, sand, slate, sit and deposit it along their courses of in river valley. In this way, the plains are formed with the help of deposit materials. Why are river plains thickly polluted? Answer: generally, the plains are the flat and made up of the fertile soil, so they provide favorable condition for agriculture. In plains, river flows slowly, therefore, it can be used for navigation. The construction of transport network is easy in flat areas. Due to these qualities, the river plains are quickly polluted. पॉपुलेटेड है बच्चों, ये पॉल्यूटेड नहीं पॉपुलेटेड, मतलब ये एरिया में जनसंख्या ज्यादा रहती है. Why are mountains thinly populated? Answer है mountains are thinly populated because they have steep slope and lack of a good soil. These conditions are not favorable for agriculture. The steep slopes, on the other hand, make the transportation and physical communication difficult. Mountain area in the world are not much developed, so they cannot provide modern facilities to their people. Now take the correct answer. So first है the mountain differ from the hills in terms of, कैसे है भाई इसमें? तो first है elevation. सेकेंड है ये एलिवेशन, आंसर इज करेक्ट है. ग्लेशियर्स आर फाउंड इन, कहाँ मिलते हैं ग्लेशियर्स? तो ये मिलते हैं द माउंटेन्स, माउंटेन्स में मिलते हैं. थर्ड है द डिकेन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है डिकेन प्लेट्यू? ये इंडिया के अंदर ही है. द रिवर यांगटेज फ्लोज इन, कहाँ पर है ये? तो आपका ये है चाइना में है. नंबर फिफ्थ है एन इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज, कौन सा है भाई इसमें? देखो तो इट इज द एल्पस, एल्पस माउंटेन है आपका. लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड ऑन अर्थ बाय प्रोसेस, तो कौन से है प्रोसेस आपका? तो ये है टू प्रोसेसेस में. सेकंड है हिमालयास इज लोकेटेड इन, कहाँ है हिमालय भाई? बताना पड़ेगा आपको, तो ये एशिया में है. थर्ड है द वोसगेस माउंटेन इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है? ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है. नाउ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड इज, हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है बताना है आपको इसमें? तो ये है तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत प्लेट्यू हाईएस्ट है. फॉर डायमंड एंड गोल्ड माइनिंग विच प्लेट्यू इज फेमस, कौन सा प्लेट्यू फेमस है बच्चों? ये है आपका बी वाला, अफ्रीकन प्लेट्यू. फॉर ह्यूमन हैबिटेशन द सुटेबल लैंड फॉर्म्स इज, कहां पर सुटेबल है बच्चों? तो ये प्लेन वाला है सुटेबल, इसी में लोग आसानी से रहते हैं. चलिए अगला आता है फिल इन द ब्लैंक्स. तो सबसे पहले है आर्म, इसमें आएगा आपका प्लेन. A plain is an
अनब्रोकन फ्लैट और अ लो लेवल लैंड। सेकेंड है द हिमालयाज एंड द एल्पस आर एग्जाम्पल ऑफ, क्या है ये? फोल्ड टाइप माउंटेन। सो यू कैन राइट हियर फोल्ड टाइप ऑफ माउंटेन। थर्ड में आता है प्लेट्यू। Plateaus areas are rich in minerals deposit। फोर्थ नंबर पे आता है द माउंटेन रेंज, यहां पे लिखेंगे माउंटेन रेंज। द माउंटेन रेंज इज अ लाइन ऑफ माउंटेन्स। फिफ्थ है द पैरेलल प्लेन्स, ये है पैरेलल प्लेन्स। The parallel plains areas are most productive for farming। How is erosion caused? So answer है erosion is caused by the action of wind, water, air, etc. Give example of fault valley. So answer is the Rhine Valley and the Tapti Valley. Name any ancient mountain of the world. So answer है the arrival Aravali mountain of India. So, name of volcano mountain. So, answer is the Kilimanjaro mountain of Africa and the Fusama of Japan. Name few famous mountain games. So, answer है फर्स्ट है ये प्रेगलिंग प्रेग्लिडिंग और ये पैराग्लाइडिंग है ये, और हैंग ग्लाइडिंग एंड रिवर राफ्टिंग। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माउंटेन। सो आंसर है माउंटेन इज अ लैंडफॉर्म व्हिच इज अप्रॉक्स 1000 मीटर अबव सी लेवल। इट हैज अ स्टीप स्लोप एंड अ पॉइंट टॉप। नेम द माउंटेन पीक मोर देन 8000 मीटर। सो आंसर इज हियर द माउंटेन पीक मोर देन 8000 मीटर आर एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट और काराकोरम एंड नागा पर्वत। What are glaciers? So slow moving rivers of snow and ice are called glaciers. Name the volcano mountain. So Mount Kilimanjaro of Africa and the Fujiyama in Japan. Name three oldest plateaus. So answer है Deccan Plateau of India and East African Plateau of Kenya और Western Plateau of Australia. What measures are taken by the government of India in order to check pollution? So, mission like Clean India, Green India has been started. Name the mountain peak which is at more altitude than Mount Everest. So answer is here the summit of Munna Ki. Originated deep beneath and Pacific Ocean and rises more than 33500 feet approx 10,205 meter above sea level. Write the natural disaster taking place in mountain regions. So landslide and flood are the common natural disaster in mountain area causing loss of life and property. How plains are formed by rivers? Answer है the main rivers along with their tributaries forms plains. Example the tributaries of Indus, the Ravi and the Beas and the Chenab, the Jhelum and the Satluj forms plain called Punjab, a fertile plain. Draw a well-labeled diagram of volcano. आंसर है ये volcano का डायग्राम पहले भी दिखा दिया था, ये molten lava है यहाँ पे
और ये वॉन्ट है और वेल्कोनो माउंटेन है ये, और फिशयुक्त है, और ये मैग्मा है। ये मैग्मा इसको बोलते हैं बच्चों, यहाँ से पिघल करके निकलता है, ऊपर की तरफ जाता है, और यहाँ से ये साइड से भी कुछ निकल जाता है, कुछ इधर से भी निकल जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, what are the major causes of pollution? So with increase in population, it causes imbalance in the atmosphere called pollution. It is caused by the waste of household industries, smoke, and the factories, etc. The various kind of pollution are air, water, noise, radioactive, etc. Write the benefits of the plateau. Answer है first है we get minerals from plateau. Second है therefore many of the mining area in the world are located on them. Third है some plateau are the home of several waterfalls which make them center of tourism. They provide back soil and they which are very fertile. The waterfalls are used in the production of hydroelectricity. What are the benefit of the mountains? So answer है they are the reservoir of water. Second है rivers have their origin from mountain. We can pure drinking water from mountain. Take a number of paper long twice, keep them on a table, compress them by your hand. You will find that towards a point they fold their folded part will be mountain. So you can see ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये फोल्ड माउंटेन बना हुआ है, ये हार्डबोर्ड है, और ये पेपर स्ट्रिप है, इसको लगा के ऐसे यहाँ पे चिपकाना होता है, फिक्स कर देना है, दबा देना है। सो डायग्राम ऑफ रिकॉग्नाइज फिट्स है, देख लेंगे आप। चलिए यहाँ पे पिक्चर दी हुई है कुछ इसमें। लुक केयरफुली एट द फोटोग्राफ 1 to 10, राइट ऑन द सेंटेंस अबाउट द ईच photograph, name the landform feature for in photograph 1, 2 and 7, what appears to be main uses of this land. Photograph number 9, what activity do you see in the photograph number 3, 6, 8 and 9। तो चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। ये फिगर अभी दिखाई दे रही है आपको, 5, 6, 7, 8, 9 तक यहाँ दिखाई दे रही है। व्हाट टाइप ऑफ हाउस डू यू सी एंड इन द फोटोग्राफ एंड नेम ऑफ द वाटर supporting games shown in the photo, and name 2 means of the transportation showing in the photograph number 1 to 10। चलिए देखते हैं इनके आंसर की तरफ। ये आंसर्स हैं, camels are the sheep of desert। सेकंड है a beach of scenes, और सीन है ये। people are enjoying boat racing, a dense forest area, mountain inhabitation, women are plucking tea leaves, tourist complexes, water boat rowing, animals grazing in the field, a beautiful sense of the snow-covered area. Name the landform plateau shown in the photograph number 1, 2 and 7. First have one sand dunes in desert area. Second है a coastal area. Third है mountain area. What appears to be main use of this land? Photograph number 9. So this land is mainly used for animal rearing and grazing. What activity do you see in the photograph number 3, 6, 8 and 9? So answer है photograph 3 boat racing, photograph 6 plucking of tea leaves and tea plantation, photograph 8 boat rafting, photograph 9 animal grazing. What type of houses do you see in photograph number 4 and 5? So answer this type of houses. Photograph number 4 seats and tents, or photograph 5 typical houses of highly area along with slopy roofs. Name the water sports game shown in the photograph number 9 and 8. So photograph number 3 boat racing, or photograph number 8 boat rowing, water suffering. Name 2 means of the transportation shown in the photograph number 1 to 10. So answer है photograph 1 that is the camel, and photograph 10 that is the roads.
What are the landforms found in your area on the basis of chapter? Write the uses of landforms. So answer: in Madhya Pradesh, the basic landforms are mountain, plateau, and plains. I stay in Madhya Pradesh, which is a plain, and its uses or benefits are: number एक, useful for agriculture; second है, it facilitates road, rail, and air transportation easily, which helps in movement of goods and services. It has small, medium, and big industries and the provides sources of employment. Fourth, it provides basic infrastructure for inhabitation, housing, school, hospitals, etc. On outline map of the world, locate the following. First है mountain peak, the Himalayas, the Rockies and the Andes. प्लेट्यू, द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। तो चलिए देखिए यही बताने हैं इसमें। यहाँ पर प्लेट्यू ऑफ तिब्बत दिखाई दे रहा है इस जगह पे, और ये हिमालयास है, इस जगह पे हिमालयास है, ये द हिमालयास। और ये आपको पूरा दिखाई दे, यहाँ द रॉकीज है यहाँ पे, और क्या बचा रह गया, द एंडीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो ये आपको इस तरह से सबको ड्रॉ कर देना है। और इसी के साथ बच्चों ये लेसन आपका फिनिश हो रहा है। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। और इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ फिर से मिलता हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।